Jai Hind, Namaste, Konnichiwa. Welcome to the Nupur Theory Show. The special edition, definitely it is for Army, Indian Army, the shield that defends India. And I'm honored today to be joined by definitely none other than Sir KGS Dhillon sir, Lieutenant General KGS Dhillon sir. So it's always been my dream. It was the first episode we did. So you're waiting for the second episode. And I'm so glad to let you know that second episode is coming with his book. Sir, welcome to the Nupur Theory Show. Thank you, ma'am, and good evening and good day to all your viewers. Thank you. So, sir, I can see the book, Kitne Gazi Aye, Kitne Gazi Gaye. So, and I read that this is from the very first day, ye bestseller on Amazon. So, how did it happen? कैसे किया आपने ये मतलब मुझे लगता है कि ये आपके प्रति प्रेम है पूरे भारत का, पूरे जहां पे भी भारतवासी है और मतलब मैं तो I think this is just amazing. A miracle happened. Yes, this book is being released on 14th of February. 14 फरवरी को इस बुक का शेल्फ पे आएगी और ये एक पुलवामा के जो हमारे ब्रेव हार्ट्स थे जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर की देश के ऊपर, सीआरपीएफ के 40 ब्रेव हार्ट, उनके प्रति एक श्रद्धांजलि के तौर पे मैं ये बुक 14 फरवरी को लॉन्च कर रहा हूँ. प्री ऑर्डर्स नवंबर से शुरू हो चुके हैं और एज यू सेड, on the day one of opening of pre-orders, it opened as a bestseller. So, देशवासियों का, लोगों का जो देश से बाहर भी हैं, जितने भारतवासी हैं, उन सब का प्यार है और I try to do my best with this book. Sir, definitely, as you said, सबका प्यार आपके प्रति है, लेकिन ये first day से bestseller, मुझे लगता है कि आपने रिकॉर्ड कायम किया है और ये तो प्रेम है, लेकिन फर्स्ट टाइम आपने ये बुक लिखा है. इससे पहले कभी लिखे थे आपने बुक या फर्स्ट टाइम इसी से आपका शुरुआत हुआ है? इससे पहले सिर्फ मिलिट्री एप्रिसिएशन लिखे थे, जब मिलिट्री ऑर्डर्स लिखे थे, जब मिलिट्री इंस्ट्रक्शन लिखी थी. बुक पहली बार लिखा है और ये बुक भी जैसे मैं रिटायर हुआ उसके कुछ एक दिन बाद ऐसे ही एक यूट्यूब इंटरव्यू के ऊपर मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त है मेजर गौरव आर्या, तो उन्होंने मेरे से बात करते हुए सवाल पूछा था कि सर, since you know so much, you have gone through so much, आपने कश्मीर के पहलू बहुत देखे हैं और फौज भी देखी है, तो क्या आप बुक लिखने के बारे में सोच रहे हैं? तो उस दिन ये विचार आया, वो शायद 5-6 दिन ही हुए थे मेरी रिटायरमेंट को. उसी दिन से लिखने बैठ गया और अगले 3 महीने में किताब पब्लिशर के पास सबमिट कर दिया. So this is how it went. So actually, after so many years you have walked, इतने सालों के बाद इतने सारे, मैं नहीं कहूंगी कि आप थक गए थे, of course नहीं थके थे क्योंकि you enjoyed your work, but फिर भी एक होता है कि थोड़ा सा ब्रेक ले लूं. वो ब्रेक ना लेके पूरी तरह अपने आप को 3 महीने पूरी तरह डेडिकेट करके आपने बुक कंप्लीट किया. ये हमारे लिए डेफिनेटली अ प्लेजेंट सरप्राइज और गिफ्ट है हम सब के लिए, लेकिन आपको नहीं लगा कि मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए? यस, जब रिटायरमेंट से कुछ महीने पहले एक फैमिली का वेकेशन प्लान किया था आउटसाइड द कंट्री, लेकिन जब ये बुक लिखने का आइडिया आया तो फैमिली ने भी मेरे को सपोर्ट किया, वाइफ ने, बच्चों ने, और वो वेकेशन कैंसिल करके मैं इस बुक में लग गया और शिद्दत से लग गया, पूरे दमखम से लग गया. एंड इट इज जस्ट वन ऑफ दोस थिंग्स, अ सोल्जर नेवर रिटायर्स, अ सोल्जर इज नेवर टायर्ड. A soldier never retires. That is wonderful line. And since आपने इस बुक को ऑलरेडी लिखना आपका कंप्लीट हो गया है, हम जानना चाहेंगे इस बुक के बारे में कि आपने किस बारे में लिखा, क्या क्या है इस बुक में और हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बुक से, क्योंकि बाहर हम बाद में पूछेंगे कि बाहर जो लोग रहते हैं वो कैसे ऑर्डर करें, लेकिन फिर भी पहले जानना चाहेंगे इस बुक के बारे में कि आपने किसके बारे में लिखा इस बुक में. दिस बुक बेसिकली, जब मैं बुक को लिखने बैठा था तो मैं सोच रहा था कि जो बच्चे, लड़के और लड़कियां फौज ज्वाइन करना चाहते हैं या फौज में शादी करना चाहते हैं, क्योंकि फौज एक बहुत ही क्लोज्ड ऑर्गेनाइजेशन है,
तो मेरा ये एम था कि उन बच्चे बच्चियों को फौज की लाइफ के बारे में बताया जाए, और सबसे जरूरी था कि वो जब देखते हैं कि एक लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों, वो सिर्फ एक एंड प्रोडक्ट को देखते हैं। वो सोचते हैं कि शायद ये एक बहुत कामयाब या बहुत ऊंचे रैंक का अफसर है। उन्हें ये नहीं मालूम कि उसके बीच में कितनी मेहनत गई है, उसके पीछे कितने फेलियर्स हैं, कितने रीअटेम्प्ट्स हैं, कितनी सक्सेसेस हैं। तो बच्चों को छोटी से फेलियर के ऊपर बहुत ज्यादा मोराल के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, उनका जो मोटिवेशन लेवल है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए एम था कि बच्चों को ये बताया जाए, फेलियर्स आर पार्ट ऑफ द गेम, failures are part of life. You never succeed in the first attempt. If you succeed in the first attempt, you will never be able to sustain that success. क्योंकि आपने failure देखा नहीं है, the success comes easy, the money comes easy, is never going to stay with you. So that was the aim. So when I started writing, I wrote about my childhood from my 3 years of age, what challenges I had. I written about my school days. I written about NDA and IMA training days. I written the life of a young officer in an infantry battalion in a very difficult area. I've written how we got married, a girl coming from a totally non-military background, how she adjusted and became part and parcel of the unit, how I was never there when my both children were born, how she single-handedly held the fort together, how my wife saw my death news twice and still was able to control herself, sustain the family together, and how she became part of the life. Then afterwards, 60% book is on Kashmir, because I had multiple tenures in Kashmir, starting with 1988, Kashmiri Pandit Success in 1990, and then coming down to Pulwama, Balakot, abrogation of 370. So this is a life story of a soldier who started as a young kid, had challenges, failed, tried again, succeeded, failed again, tried again, and then rose to become the corps commander of Chinar Corps. And you have been in Kashmir so many times, you understand what Chinar Corps commander's life is. So this is the full package book for everyone who wants to read about soldiering, youngsters, motivation, Kashmir, the politics of it, the terrorism, how it started, how it is going, as also I have written a chapter on what are the way forwards. So this is all about the book. क्या बात है। तो आपने जैसे बताया कि दोनों बच्चों के जब वो बॉन्ड हुए थे, आप थे नहीं, शी सिंगल हैंडेडली सब कुछ मैनेज किया, और शायद उस वक्त उन्होंने बहुत मिस किए होंगे आपको, लेकिन मुझे लगता है कि आपने पूरी तरह इस बुक के द्वारा वो जितना भी था, यू हैव ऑलरेडी पेड इट बैक, कि हाँ, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर दैट। क्योंकि हम लोग बहुत सारे शब्दों में बोलते हैं, लेकिन जब लिख के देते हैं उसका कुछ मायना अलग होता है। मैं बस थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है, मैं जानना चाहूंगी कि मिसेस डिलन उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, क्योंकि आप जब लिख रहे थे डेफिनेटली इट वाज डिफरेंट, शी डिडंट नो व्हाट यू आर राइटिंग, सो हाउ डिड शी रिएक्ट? She is a wonderful sport always. She is always a family person, and she is always by my side. And when I am on the front, she is always behind me. And she made all the cups of coffees at night when I was writing the book. And she's been a wonderful companion of life, and she's great. And I must say one more thing. A lot of people see army wives as very charming, intelligent, educated, very gracious, with a lot of poise ladies. What they do not see, they are very strong-willed iron ladies. They are the best family members whom we can have on this planet. They are the pillar of the family. हिंदी का बात है, धुरा जो होता है, excel. The family revolves around them. They are something extraordinary. And I am not talking about my wife. I'm talking about each and every girl who is married an army man of whatever the rank, Jawan, officer, anyone. They are the most strongest people on this planet. Totally. आपने फिर बताया कि 2 बार the news of your death came. So when those 2 times, we would love to know, and those 2 times, when were those 2 times when the news of your death came? Both the times I was posted in Kashmir, and both the times I was posted in very difficult areas where the mobile connectivity, in the first instance, the mobiles were never there.
In the second instance, the connectivity was bad. So first instance, I was a major, and she was 8 months pregnant at that time. And there was an unfortunate incident written in detail in the book. She saw the news of my death on the television. And then next day morning, she was staying with her parents, and next day morning, she read it in the newspaper. So when it was her duty, because she had elderly parents, it was a duty to, look after the young boy who was already there and the girl she was 8 months pregnant. But at the same time, she did not want to disturb her parents. That's why I tell you, they're very strong women in our lives. She hid the newspaper. And by about middle of the day, I could speak to her. And that is when the whole thing got resolved. Second time, she was the commanding officer's wife. I was the commanding officer again in Kashmir. And there were other unit officers and Jawans, and their wives were staying in the same station. She got the news at night. And when she got the news, she was very bothered about 2 children she has to bring up all by herself. But at the same time, she was worried that tomorrow morning when the Jawans and the officers' wives come to meet her, she should not be putting up a shattered face. She should stand like a rock and show that commanding officer's wife cannot be shattered, because that would mean the loss of morale for those girls also. So both the times, hats off to her, she managed it very well. So it's given in great detail in the book. Exactly. So definitely, मैं पूरे दर्शक के लिए बोलना चाहूंगी कि आप लोगों को आप लोग थोड़ा सा जान रहे हैं कि बुक में क्या है, और भी विस्तार से आप जानेंगे. मुझे लगता है कि एक सोल्जर के लाइफ जो शुरू से लास्ट तक, जो सर ने बताया कि आप लेफ्टिनेंट जनरल केजीएस धिलन को देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो शुरुआत थे, जिन जिन लोगों ने उनको सपोर्ट किया, एंड द सपोर्ट सी गॉट फ्रॉम द फैमिली, एवरीबॉडी सैक्रिफाइस एवरीथिंग. आई थिंक अमेजिंग. आई थिंक वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू सर दैट द एवरीथिंग यू हैव रिटन with so much details that people will have more respect. Definitely we do respect army. I think even those who have doubt about little bit, they will also start respecting army, and especially army's wives. They're phenomenal. They're just amazing. सर आपने रखा है, जैसे हमें दिखाई दे रहा है, कितने गाजी आए और कितने गाजी गए. तो आपके टाइम में कितने गाजी आए थे? मैम, पाकिस्तान टेररिज्म जो कश्मीर में फैला रहा है, तो जो पाकिस्तानी टेररिस्ट आते हैं वो सब अपना कोड वर्ड के साथ में ऑपरेट करते हैं कश्मीर में, और गाजी एक बहुत प्रेफर्ड कोड वर्ड है. सो बहुत से गाजी आए, बहुत से हमने एलिमिनेट किए. इसीलिए ये लाइन भी आई जब किसी ने मेरे से सवाल पूछा था कि इज गाजी किल्ड. गाजी वाज द लीडर ऑफ द मॉड्यूल of Jaish-e-Mohammed, which had carried out the Pulwama ID blast. So once we eliminated a module within 100 hours, I was asked in a press conference, is Ghazi killed? That is when I said, Kitne Gazi Aye, Kitne Gazi Gaye, parwah nahi. And to your question specifically, Kitne Gazi Aye, मैं मोहम्मद गजनी से शुरू हुए थे. परवाह नहीं है, हिंदुस्तान will always stand strong and always stand tall. We, the nation, will not be deterred by any Ghazi. Let any Ghazi come. Kitne Gazi Aye, Kitne Gazi Gaye. No worries. Exactly, sir. That's the thing. जब हमारे पास आप जैसे लेफ्टिनेंट जनरल है, तो हमें कितने भी गाजी आए वो बस चले जाएंगे. कहाँ जाएंगे आप लोगों को ही पता है. मतलब better than us. Definitely. So हम थोड़ा सा कश्मीर में जाना चाहेंगे. You love Kashmir. When last time we had the interview, you said that everything in your house, everything is from Kashmir. You love Kashmiri food. Everything was about Kashmir. So now you're, I think, a few months you are away from Kashmir. So how does it feel? कैसा लग रहा है? Ma'am, the distances make the hearts grow fonder. So अभी क्योंकि कुछ समय से कश्मीर नहीं गया हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ थोड़े दिनों के बाद में, तो कश्मीर तो दिल में है. जैसे हिंदुस्तान दिल में है, वैसे ही कश्मीर भी दिल में है. It will always remain because I worked so much in Kashmir. I have so much love for Kashmir.
There's so many Kashmiri people, wonderful people, whom I know, and I interact with them on daily basis on social media. And I love Kashmir. I always will love Kashmir. मैं यहाँ पे थोड़ा बोलना चाहूंगी, मैं कश्मीर गई थी और जितने लोगों से मैं आपके बारे में बात करी, सबका रेस्पेक्ट इतना ज्यादा है आपके लिए. सो इट शोज डेफिनेटली आपके दिल में कश्मीर है और आप उन लोगों के दिल में हैं. Yes, thank you, thank you. सो हम तो फिर हम जानना चाहेंगे कि इस बुक में आपने आपके 3 years से लास्ट तक आपने लिखा ऑलरेडी, and this is definitely, you know, since the very first day it is the best seller. Now हम जानना चाहेंगे इस बुक को जहां पे भी, मैं तो चाहूंगी कि हर भारतीय जहां पे भी हो, जिस देश में हो, सारे खरीदे and जाने about, you know, not only about you, because you haven't written it for yourself only, you have written it for the entire institute that is called Army and for India. So ये बाहर के लोग कैसे इसको खरीद सकते हैं? नॉर्मली अमेज़न से खरीद सकते हैं वो लोग? मैम, इस बुक के बारे में बहुत सी डिमांड थी ओवरसीज कंट्री से. तो मेरे जो पब्लिशर्स हैं इस बुक के, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया, उन्होंने इस बुक को यूएसए, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया, उसके लिए प्रिंटिंग ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है. तो बाय अबाउट एंड ऑफ जनवरी, अमेज़न ऑफ यूएसए, यूके एंड कनाडा will have a link where you can order the book locally from the local Amazon. So उन कंट्रीज के लिए बुक की प्रिंटिंग ऑलरेडी चल रही है. 30th या 31st जनवरी के आसपास वो लिंक विल बी अप ऑन द Amazon साइट एंड द बुक विल बी डिलीवर्ड बाय 14th February. That is our plan as of now. Okay. तो ये तो बहुत खराब हुआ सर, आप जापान के लिए नहीं किया? मैम, आपके लिए बुक मैं पर्सनली भेजूंगा. Thank you. I'm so honored. Definitely. And जो प्री ऑर्डर हो रहा है सर, इसको आप खुद ही साइन कर रहे हैं? Yes, ma'am. जितने भी बुक्स प्री ऑर्डर हुई हैं, all the books which have been pre-ordered till date or which are going to be pre-ordered, I have personally signed all the copies for all the readers. Wonderful. Hand signed copies. Wonderful. So, sir, we keep seeing you always busy, you know, with either with the you know, TV channels or with other interviews or anything, you know, and we don't see that you are ever tired of doing anything. You're doing with smiling face, making everyone happy. Like, how do you do that? कैसे आप कर पाते हैं इतना सबको? हम देखते हैं कि आपके you know, आसपास जो आते हैं, आपके ऑरा से वो खुश हो जाते हैं. ये कैसे होता है? मैम, मेरे एक चीज मैं बच्चों को बताना चाहूँ, खास करके यंग चिल्ड्रन, जो भी करो लाइफ में ना, एक हिंदी का उर्दू का वर्ड है शिद्दत. जो भी करो शिद्दत से करो, अपने पूरे दमखम से करो. इफ यू डोंट फील लाइक डूइंग इट, डोंट डू इट. जस्ट से सॉरी, आई एम टुडे नॉट अप टू इट, आई विल नॉट डू इट. एंड लेकिन not only the TV channels or the interviews or social media or other personal things, I give a lot of time to the family and myself. I go out on long drives, I eat out at dhabas, I go to a taxi stand, have a cup of tea on that from that chai wala. Me and my wife, we just drive out, just stop anywhere and have a meal and come back. So we actually spend a lot of quality time together with family, with friends, and at times all by myself listening to music or just driving around the countryside. So it's a wonderful life. It's a wonderful life. Yeah, exactly. It's a wonderful life and such an inspiration, not only, you know, for any army person, not only, like for everyone. The way you are inspiring us कि every moment जियो, जिंदगी every moment जीने के लिए है. तो ये जो आपका जो ये शुरू से था या कुछ रियलाइज बाद में हुआ कि नहीं, मुझे every moment जीना है, चाहे मैं आर्मी में हूँ या रिटायरमेंट के बाद भी? ये शुरू से आपके मन में था या you just got it later? मैम, जब आप यहाँ आपके व्यूअर्स बुक पढ़ेंगे तो उनको मालूम पड़ेगा. तो मैम, I was a very normal child in school, like any other kid. I had my challenges, I had my failures. और उन फेलियर्स ने जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ा, तो फेलियर्स ने सिखाया मेरे को कि जिंदगी जीनी है तो जिंदगी शिद्दत से काम करना पड़ेगा. अगर इज्जत कमानी है तो शिद्दत से काम करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि मैम एवरीथिंग केम इजी, नथिंग कम्स इजी. सो जिंदगी में
ठोकरें खा के फेलियर्स के बाद में जो लेसन्स थे, उन लेसन्स ने बताया कि जो भी काम करो अच्छे से करो, द सक्सेस इज जस्ट वेटिंग अराउंड द कॉर्नर. So that's what, and now that has become part of life, that has become nature. So. एग्जैक्टली तो मैं भी दर्शक को थोड़ा बोलना चाहूंगी कि मैं सर से पर्सनली मिल चुकी हूँ. ही इज लाइक वंडरफुल पर्सन. और मैं अगर ये बोलूं कि इतना इनोसेंस है सर में, आप सोचेंगे कि एक लेफ्टिनेंट जनरल है और उसमें इनोसेंस, हाँ इतने इनोसेंस है, इतने बच्चों की तरह बात करते हैं. नो दैट इज, इट वाज फैसिनेटिंग, यू नो. सो रियली, यू नो, यू टॉक कि जिसके साथ जैसे बात करना है. सो टोटली, एंड इट इज सो ऑसम फॉर, यू नो, कमिंग फ्रॉम ए लेफ्टिनेंट जनरल. नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि चलो किसी कंपनी का एम्प्लॉय है, आप पूरे आर्मी का लेफ्टिनेंट जनरल है एंड किसी के साथ इतने इनोसेंस के साथ बात करते हैं. कैसे कर पाते हैं ये? फिर वो भी हम जानना चाहेंगे. मैम, इंडियन आर्मी में like corporate world, people would know there's a HR department, human relations department, human resource department. Everyone is scared of that HR department. You never know when they are going to throw you out. True. But in the Indian Army, HR, the human resource which we have, our soldier is our weapon system. If we do not keep the soldier happy and motivated and with a high morale, we will never win a war, or we will never be successful in counter-terrorism and counter-insurgency operations. For us as commanders and leaders in the military, it's very important to remain in touch with the soldier and always, be approachable to him. So that has become as a human nature. So, sir, we would like to know about your, so long you spent in army, like you almost your entire life, the professional life. So, we would like to know that actually there are some incidents जहाँ पे आपको ऐसा कुछ हुआ जो आपको अभी भी सोच के हंसी आते हैं कि वो ऐसा हुआ था. हम जानना चाहेंगे. एंड डेफिनेटली वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो आपके बुक में भी होंगे, लेकिन इस इंटरव्यू में हम जानना चाहेंगे आपसे. हम ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स होते हैं क्योंकि आर्मी एक इतनी इंटेंस सर्विस है और इतनी, जिसको हम कहते हैं कि हर वक्त मतलब खतरा रहता है अपने काम में भी और दुश्मन की तरफ से भी या टेररिस्ट का भी, और खास करके कि वो अगली उनकी मूव क्या है उसके बारे में सोच विचार करना कमांडर्स के लिए बहुत जरूरी है. सो लाइटर मोमेंट्स या फन मोमेंट्स फौज में बहुत जरूरी है और ये आती हैं मैम हर छोटी छोटी चीज के अंदर, जिसको हम कहते हैं कि खुशी होती है, हर छोटी छोटी चीज के अंदर कोई हंसी मजाक रहता है. और कई बार तो ऑपरेशंस के दौरान भी ये होता है. तो मैंने ऐसे बहुत से किस्से अपनी किताब में लिखे हैं. तो उनमें से मैं आपको एक किस्सा चलो मैं बताता हूँ. मैम, ये था जब मैं फौज मैंने ज्वाइन की, तो शुरू से जब हम अकेडमी में थे तो ये होता था कि शायद जो कुक हाउस का खाना है, जो लंगर का खाना है, जवानों का जो खाना है, वो बहुत टेस्टी होता है. और जब मैं सिक्किम में गया जनवरी 1984 में, बर्फ गिर रही थी, बहुत ठंड थी, 16,000 फुट की हाइट थी. तो जिस बंकर में मेरा बंदोबस्त किया गया, तो जब रात का खाना आया तो उन दिनों में लाइट वगैरह नहीं होती थी, तो पेट्रोमैक्स जल रहा था जो कि केरोसिन ऑयल का एक इल्यूमिनेटिंग डिवाइस है. वो भी बहुत बेचारा धीरे धीरे चल रहा था. तो जब खाना आया तो मेरे को जो लड़का खाना लेके आया उसने बोला कि साहब ये बाकी तो दाल सब्जी कुक हाउस से आई है, ये वाली जो एक कटोरी में सब्जी है ये सूबेदार साहब ने खुद आपके लिए भेजी है. तो हमारे जवान क्योंकि राजपूताना राइफल्स राजस्थान से आते हैं, तो उन्हें मिर्ची का बहुत शौक है. फौज में हर रेजिमेंट की अपनी अपनी एक खासियत है. जैसे मराठास और राजपूत मिर्ची बहुत खाते हैं, तो मेरे को ये मालूम नहीं था. जैसे वो अंधेरे के बीच में मैंने वो थोड़ा खाना शुरू किया, तो एक रोटी का टुकड़ा जब तोड़ के जिस कटोरी को सूबेदार साहब ने भेजा था, मैंने उसमें अच्छे से उसको लपेटा और अपने मुंह में डाला, तो वो एकदम बिल्कुल आग का गोला था. वो लाल मिर्ची देसी घी में और लहसुन में फ्राई की हुई थी, तो वो उसकी सब्जी थी. तो उस दिन मैं जब ऐसे एकदम से पानी पानी बोलने लगा, तो जो लड़का खाना लेके आया था तो वो बोला, कहता साहब अगर राजरीफ की नौकरी करनी है तो मिर्ची तो खानी पड़ेगी.
और राजनीति के स्टार जो होते हैं काले कलर के होते हैं, गोल्डन ही होते हैं, कहता है काले तारे लगाने पड़ेंगे, मिर्ची खानी पड़ेगी। तो हम ऐसी छोटे छोटे कई हादसे, उससे फिर बहुत सीखने को मिलता है। लेकिन गुड थिंग वाज, उसके बाद में जो स्वीट डिश थी वो चूरमा था, और अच्छा। मैंने कम से कम 3 या 4 लड्डू चूरमे के खाए। वो एक जो पीस मैंने अपना उस मिर्ची की सब्जी के साथ में खाया था उसके बाद। तो मैं बहुत हंसी की बहुत चीजें हैं किताब में, मैंने बहुत कुछ लिखा है। आई डोंट वांट टू divulge ऑल द डिटेल्स, डेफिनेटली। रीडर्स विल लव इट। हाँ, तो वही मतलब द पीपल हु विल बी रीडिंग द बुक, डेफिनेटली आई विल बी रीडिंग एज वेल, तो वी विल कम टू नो ऑल दोस स्टोरीज अबाउट इट एंड दोस स्टोरीज। लेकिन आज आप फौज से दूर है, जिसको आप, फौज आपके हार्ट है, डेफिनेटली हम सबके हैं, तो आप तो पूरी तरह वहां पे ही थे। आपके लिए बहुत इट मीन्स अ लॉट। तो आज आप क्या मिस करते हैं, सबसे ज्यादा मिस क्या करते हैं? मैम, फौज का जो भाईचारा है, हम्म। वो चाहे मैं फौज के अंदर हूं या सर्विस में हूं या सर्विस के बाद रिटायरमेंट के बावजूद भी, फौज का भाईचारा जारी रहता है या लगातार, इट कंटिन्यूस। आई एम स्टिल इन टच विद एवरीवन इन द आर्मी एज आई वाज अर्लियर। द ओनली थिंग आई मिस, जो चीज मैं हर रोज सुबह उठ के मिस करता हूँ, यूनिफॉर्म पहनना, ऑफिस जाना या अपनी पलटन में जाना, जवानों से मिलना, जवानों के साथ बैठ के खाना खाना, और जवानों के साथ बैठ के छोटी छोटी बातें शेयर करना। वो चीज जो एक लाइफ का हिस्सा बन गई थी 40 साल से, उसको बहुत मिस करता हूँ। वो भाईचारा कायम है, लेकिन वो जो हर रोज मिलना, हर रोज बातचीत करनी, छोटी छोटी बातों के ऊपर एक दूसरे से सवाल जवाब करने, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो यूनिफॉर्म पहनना, वो सब चीजें बहुत मिस करता हूँ। आई मिस दोस्त। एंड जो अभी फ्रॉम डिफरेंट लाइफ, जैसे आपने बोला कि पहले कि यू स्पेंट मोस्ट ऑफ योर लाइफ विदाउट योर फैमिली, योर वाइफ टुक केयर एवरीथिंग, सो नाउ ऑल ऑफ अ सडन फ्रॉम देयर टू द फैमिली लाइफ, दैट transition, did you have any problem there? Most of the time I was away to Yeah. field areas, and wife was taking care of all the household things Yes. and the children education. And I just want to say, जब मेरे बच्चों ने स्कूल में एडमिशन लिया तो मैं घर पर नहीं था, वाइफ ने खुद किया। जब उन्होंने 10th क्लास किया और 12th क्लास किया पास, तो मैं घर पर नहीं था। जब उन्होंने प्रोफेशनल कॉलेजेस में एडमिशन लिया, मैं तो भी घर पर नहीं था। जब उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मैं तो भी घर पर नहीं था। और ऑफ कोर्स जब वो दोनों बच्चे पैदा हुए, मैं तब भी घर पे नहीं था। तो ये सब चीजें जिंदगी में बहुत मिस की, और अभी घर में हूँ, बच्चों के साथ हूँ, वाइफ के साथ हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस वाली पॉलिसी हमने अपना रखी है, क्योंकि पिछले 40 साल से घर कैसे चलना है वो हमेशा वाइफ डिसाइड करती थी। और जिस दिन मैं रिटायर होकर वापस आया, फॉर अ पीसफुल लाइफ और पीसफुल फ्यूचर, मैंने अपने आप से एक वादा किया था कि इनके किसी भी कार्रवाई में इंटरफेयर नहीं करना है। जो जैसे घर का काम वाइफ चलाएगी वैसे ही चलने देना है। मैंने अपनी तरफ से कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करनी है। अगर सलाह मांगी जाएगी तो फिर सलाह दूंगा। जैसे भी थोड़े दिन पहले मैम पूछा गया कि आप क्या खाएंगे, तो आई सेड सो एंड सो डिश। कहते वो रहने दो, वो ठीक नहीं, दूसरी बनाते हैं। ऐसा ओके। तो आई डोंट इवन इंटरफेयर व्हेन इवन a choice is asked. So that is the secret of happy peaceful retired घर life. घर की जनरल। So, टोटली। तो मतलब ये इस पे मैं बोलना चाहूंगी कि कभी कभी मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में आर्मी के खिलाफ लिखते हैं, और नॉट ओनली सोशल मीडिया, इवन द मीडिया में भी आर्मी के खिलाफ बहुत बार बोलते हैं। तो आपने जो अभी बोला कि जब उनका जन्म हुआ था आप नहीं थे, स्कूल में एडमिशन में आप नहीं थे, जब कॉलेज से ग्रेजुएशन हुए तब नहीं थे, तो जो रियल द इम्पोर्टेंट मोमेंट्स you should have had in your life, those you missed, and they missed as well, without having their one parent only having with them. So for those people I would like to say, जब आप आर्मी के ऊपर इतने सारे सवाल उठाते हो तो आप कभी सोचते हो कितने सैक्रिफाइस करते हैं वो लोग देश के लिए। तो इस पे मैं पर्सनली आई वुड लाइक टू से कि पूरे इंडिया की तरफ से जितने, जहां पे भी जितने भारतवासी है, हम लोगों का कोई ना कोई तो इंडिया में है, और आप लोग उन सब के लिए काम कर रहे हैं। आप लोग यू आर प्रोटेक्टिंग ऑल ऑफ अस, सो
we are so grateful to you, sir. We are so grateful. The entire India, we are, even the words very less if I say thank you. Really, we are grateful, and we don't have words to say how grateful we are. Thank you, and Jai Hind, sir. Thank you. Maybe I'm becoming more emotional, but I think we have to deal with emotion as well. So, sir, Thank you, ma'am. And yeah. yes, sir. तो सर इसमें जब आप सुनते हैं ये सब, जब आर्मी के खिलाफ लोग दे I think intentionally they just want to hurt people. So how do you feel at that time? Like, do they really mean those, or just politically influence those words are? मैम, ये जो पॉलिटिशियन या राजनीति करने वाले लोग जो भी कुछ बोलते हैं, एटलीस्ट आई डोंट टेक देम सीरियसली। बट हैविंग सेड दैट, मैम, जो लोग आर्मी के बारे में कुछ बोलते हैं उनको मैं सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूँ। मैम, हम तो वो लोग हैं जो मिट्टी को भी माँ बोलते हैं, और उसी माँ के वीर सपूत जो हैं, बच्चे जो हैं, वो बॉर्डर के ऊपर हथियार लेकर के ठंडी हवाओं में, बर्फ में खड़े होकर के ड्यूटी देते हैं। हर रोज शाम को जब वो अपनी पोस्ट से बाहर निकलते हैं, चाहे वो ड्यूटी पे जा रहे हैं, चाहे पेट्रोलिंग में जा रहे हैं, चाहे काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में जा रहे हैं, तो वो ये सोच के निकलते हैं कि शायद जिंदा वापस नहीं आएंगे। अभी उनके शौर्य के ऊपर, उनकी बहादुरी के ऊपर, उनकी वीरता के ऊपर, उनके वैलर के ऊपर सवाल उठाना, जब उनके लिए कोई गलत शब्द बोलना, मेरे हिसाब से मैं इससे ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल मतलब नहीं हो सकता कोई भी देश में। तो एक बार सोचिए, एक बच्चा, जवान में छोटे बच्चे 17-18 साल से, हम भी 18 साल की 17 साल की उम्र में फौज में भर्ती हो गए थे इंडिया में, तो हर रोज रात को जब निकलते हैं तो पता नहीं होता है वापस आने, लेकिन हम देश के लिए जाते हैं, हम हिंदुस्तान के लिए जाते हैं, हम उन लोगों के लिए नहीं जाते जो उल्टी सीधी बात बोलते हैं। गॉड ब्लेस देम, गेट वेल सून इज माई मैसेज टू दोज पीपल। लेकिन जो 99.99% ऑफ इंडियंस, द रिस्पेक्ट दे हैव फॉर द फोर्सेस is what drives us. That's what keeps us motivated, and that's what keeps the Indian Army, Indian soldiers in the highest of morale. So I respect to all the Indians who support their forces, who support their army. Thank you to them, and I must say, Jai Hind to them. This is very, perfectly you have said, and this is actually, and that is the, example that आपके book, the pre-order पे, first day पे bestseller बन गया, because we all are with you, we all love you, we all love our army, and we know how valuable they are. As you said, that when they leave home, and they don't know, definitely their family members also, they don't know whether they will be returning or not. So that is the thing we have to always remember, that they are not for anything but for the Hindustan, for Bharat, for India. They are just, they are making sure that we are secure there. And this is my appeal to everyone, to every Indian, whoever, wherever you are, just this is the minimum thing we can do to respect them. And this is we should do. If you don't do from today, definitely start doing it, knowing the truth of their lives. And sir, थोड़ा सा इमोशनल से बाहर होके हम थोड़ा गाजी के पास जाना चाहेंगे, कि आपके बुक में तो पाकिस्तान के बारे में आपने बहुत लिखा होगा, और क्योंकि आपकी जिंदगी ज्यादातर तो आपने इतने सारे पाकिस्तान, मतलब गाजी के साथ आपने फाइट, डेफिनेटली उनको भेजा, मैं कहाँ भेजे वो डेफिनेटली दैट इज आल्सो यू हैव रिटन, आई एम श्योर। तो आज जो पाकिस्तान का जो हाल है आज, तो आपको क्या लगता है कि the country, even my last interview also we talked about it, the country which is actually the part of us, the Harappa, Mohenjo-daro, the civilization, that the civilization started from there actually. So जो आज अब एक देश को लेके एक बंटवारा करके आज भीख मांग रहा है पूरी दुनिया से, तो आपको क्या लग रहा है कि क्यों ऐसा हुआ? मतलब why actually Pakistan has become like that, the today's Pakistan? Ma'am, there is a very famous quote. एक अंतरराष्ट्रीय लीडर ने यूएसए के, उन्होंने बोला था कि if you have snakes in your backyard,
you don't expect them to bite your enemy only या your neighbor only. So अगर आप सांप पालते हो तो ये सोचो कि सर मेरे पड़ोसी को काटेगा, तो वो सही बात नहीं होगी, वो सोचना सही नहीं हुआ. पाकिस्तान ने वो सोचा कि मेरे सांप तो सिर्फ पड़ोसी को काटेंगे. लेकिन अभी हम किसी भी देश की जो एक काबिलियत है उसके 4 पिलर्स या 4 मापदंड होते हैं कि उनकी पॉलिटिक्स या डेमोक्रेसी कितनी स्ट्रांग है, उनकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है, उनकी मिलिट्री कितनी स्ट्रांग है और उनकी डिप्लोमेसी कितनी स्ट्रांग है. पाकिस्तान इन चारों मापदंड में सबसे नीचे है. उनके पॉलिटिकल टर्मोइल के बारे में हम सबको मालूम है किस तरह से अस्थिरता फैली हुई है. इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान वी नो कितना ज्यादा उनके ऊपर डेट है, कहाँ पे प्राइसेस जा रहे हैं पेट्रोल के, आटा नहीं मिल रहा है, और कितना उनके ऊपर लोन है जो उन्होंने रीपे करना है. उनकी मिलिट्री के ऊपर इतने इतने बड़े करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं. फर्स्ट टाइम है कि पाकिस्तान की मिलिट्री को लोग क्वेश्चन कर रहे हैं. और डिप्लोमेसी तो आपने देख लिया, जब 370 की एब्रोगेशन हुई तो किसी ने भी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया. एवरीवन सपोर्टेड इंडिया. सो इंडिया की डिप्लोमेटिक माइट, इंडिया की मिलिट्री माइट, इंडिया की इकोनॉमिक माइट एंड इंडिया की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के सामने पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, और वो बहुत बुरी तरह से इस वक्त काफी नीचे है. Having said that, we would like to have a happy Pakistan, a good neighbor, a prosperous Pakistan. क्योंकि अगर हमारा नेबर prosperous है या हमारा नेबर is doing well for himself, then we will not have any problem. लेकिन अगर हमारे नेबरहुड में प्रॉब्लम है या हमारे नेबर के यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो there are chances we will get adversely affected by that. So it is his wish that they leave out all the state-sponsored terrorism and the dirty activities which they're involving in, and be a good member of international community and be a good neighbor. Look after the problems of their people. There are a lot of problems in Pakistan of education, health, sanitation, and debts and other things. And handle those issues, address those issues, instead of putting all the money in terrorism. So let's live as a peaceful neighbors and good neighbors. But I don't think Pakistan will go that way, knowing their history. But anyway, Exactly. good luck to them. Exactly. So आपने पुलवामा के दिन February 14 को आप इसको रिलीज कर रहे हैं. डेफिनेटली इस बुक में तो उसके बारे में आपने बहुत कुछ लिखा है, मुझे पता है. लेकिन हम जानना चाहेंगे कि कश्मीर के बारे में, और आपने ज्यादातर कश्मीर, आपसे ज्यादा कश्मीर के बारे में कौन बोल सकता है. कश्मीर का हालत जो आज 370 के बाद जो चेंज्ड न्यू कश्मीर है, उसके बारे में बहुत सारे लोग जो कश्मीर नहीं जाते हैं, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है, नहीं जानते हैं कि जो समझते हैं कि सेफ नहीं है. और क्योंकि मैं बहुत बार एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, पीपल फ्रॉम आउटसाइड दे से डोंट गो देयर. आई नेवर हर्ड, एवरीवन told me not to go there, not to go there. So I think people really don't know, and I would like to request you to tell people that changed Kashmir, today's Kashmir about, and what you have written in your book also, that about the Kashmir. Ma'am, Kashmir per se is a very beautiful place, the landscape wise, and very beautiful place from the point of view of the people. बहुत ही खुश मिजाज, एजुकेटेड, इंटेलिजेंट, वेरी हॉस्पिटेबल, मेहमान नवाज लोग हैं कश्मीर के. इंटेलेक्चुअल्स हैं, पोइट्स हैं, राइटर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, आर्टिजन्स हैं. कश्मीर के तो कण कण में खूबसूरती है. कश्मीर के हर एक बशिंदे में, हर एक आदमी में, और हर every Kashmiri is a beautiful soul. It is Pakistan who destroyed the fiber of Kashmir. Now, having said that, the terrorism over the last 33-32 years has been plaguing Kashmir. उसका इम्पैक्ट जो है, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक इम्पैक्ट, आज की जो जनरेशन है कश्मीर की, वो भुगत रही है. जब टेररिज्म स्टार्ट हुआ, कश्मीरी पंडित वहां से निकाले गए, एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर गया, स्कूल जला दिए गए. उसके बाद में हर रोज हड़ताल या स्ट्राइक, बंद कॉल दी जाती थी हुर्रियत से. 300 दिन तक स्कूल नहीं खुलते थे एक साल में. बच्चों की पढ़ाई का इतना नुकसान हुआ, उनको कंपल्सरली अगले क्लास में प्रमोट कर दिया जाता था. और जब बच्चों ने 10th या 12th में आए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए फॉर गुड कॉलेजेस, गुड यूनिवर्सिटीज, प्रोफेशनल कॉलेजेस, सिविल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, दे कुड नॉट कम्पीट बिकॉज एजुकेशन का बैकग्राउंड नहीं था, बेस नहीं था. So they were left with no choice.
आर्टिकल 35A के कारण जब 1990 से इंडिया की इकोनॉमी वाज बूमिंग, the MNCs were coming and doing business in India. Because of Article 35A, MNCs were not able to establish their business in India, in Kashmir. Hence, there was no job creation. There was no education. There was no future of education. There was no higher education. And there was no job creation. So people were on the roads, the young boys, as a cannon fodder for the terrorist organizations to enroll them. And they would lose their life within 7 days or 3 months or 6 months. This was the situation of Kashmir, which happened because of Pakistan. Now today, after 5th of August 2019, when Article 370 was abrogated, I read in my book in great detail about how Article 370 was abrogated, what preparations we did, how we implemented peace, how we made sure no loss of life. So today, all the terror indices or the parameters, may it be number of terrorists present, may it be number of terrorists killed, may it be number of terrorist initiated incidents, may it be the new young boys or Kashmiri boys joining terrorism, or may it be the civilians killed in terrorist actions. All these indices are down. There is no stone pelting, there are no hartals, the life is peaceful, the schools are open as much as 280 to 300 days in a year. We'll count out the Saturday, Sundays, so it makes it 365. So this is a new Kashmir. Infrastructure development is happening. IIMs are coming in, IITs are coming in, new airports are coming in, universities are coming in. So medical colleges are coming in. So this is the future of Kashmir. And most important, the people of Kashmir who have understood and tasted the dividends of peace, their livelihood has increased, their income has increased. Now they are yearning for peace. They don't want to go back to those black days or the dark times. So it is the people of Kashmir who are asking for peace. And this is the stage when peace is bound to return, because the common people, the Awam, is yearning for peace now. This is actually people from outside Kashmir, they should know, and very beautifully you have explained. Definitely, they want, Kashmiris want, they want peace, and definitely it is going to happen. एंड सर थोड़ा सा लाइटर क्वेश्चन है, तो आपको अगर आज बोला जाए कि आप आज से कुछ और प्रोफेशन चूज कर सकते हो, व्हाट वुड बी योर प्रोफेशन टुडे, मतलब फ्रॉम टुमारो? सेकंड, ओके, कुछ तो निकल आइए। ये इस क्वेश्चन का मल्टीपल चॉइस सही नहीं है आंसर। इस क्वेश्चन का बस एक ही आंसर है, वही सही आंसर है। अच्छा, तो आर्मी के मतलब मैंने सोचा कुछ कुकिंग बुकिंग आप कर लेंगे, हम आपको जाके हेल्प कर देंगे। आर्मी की नौकरी के दौरान कुकिंग का बहुत मौका मिलता है। आई हैव बिकम अ वेरी एक्सपर्ट कुक व्हाइल सर्विंग द आर्मी। मैंने अपनी बुक में लिखा है, जिस दिन पहले दिन हमारे घर में खाना बना, तो माय वाइफ वांटेड टू कुक समथिंग स्वीट। आई वाज यंग कैप्टन, तो उन्होंने जब किचन में गए, उन्होंने सोचा हलवा बनाते हैं। एंड उन दिनों में तो यूट्यूब वगैरह नहीं होता था, रेसिपी वगैरह नहीं होती थी, तो शी वाज स्ट्रगलिंग टू मेक हलवा। Then I had to get up for the first time. The cooking in my home was taking place. I went into the kitchen and made halwa, and I can tell you it was delicious. So army में cooking का बहुत मौका मिलता है। So what is your, like, what is the best thing, best dish that आप मतलब that is the thing I make best, ऐसा कुछ डिश है आपका सिग्नेचर डिश कुछ? I make lot of dishes, Indian dishes and otherwise also. इंडियन डिश में तो नॉर्मल रोटी चावल पराठा सब्जी दाल ये सब कुछ तो बना ही लेता हूँ, बट नॉन इंडियन डिशेस में आई टेक प्राइड इन मेकिंग shepherd's pie. I take pride in making very nice pizzas. Wow. And and I also of course that anyone can do pastas and noodles, but shepherd's pie and pizza and different recipes of non-vegetarian, basically chicken. I love all those. Wonderful. तो मेजर आर्या ने आपको एक इंटरव्यू के दौरान बोले थे कि ये बुक लिखने के लिए, और आज ये रिलीज से पहले ही बेस्ट सेलर हो गया। मैं आपको बोल रही हूँ एक 5-स्टार आर्मी ढाबा खोल दीजिए। बिल्कुल मैम, पंजाब में there are a lot of dhabas by the name फौजी ढाबा,
I think Okay. I'll also take your suggestion very seriously. That is also going to be, super hit, I'm sure. Before even you open, there will be line. Yes. Totally. No, that is, I'm sure that anything you will do, जैसे आपने कहा कि शिद्दत से, वो शिद्दत होना बहुत जरूरी है, and anything you will do बहुत शिद्दत से और सुपर हिट होना ही है, उसको बिग हिट होना ही है. सर, लास्ट में बस हम ये बोलना चाहेंगे, आपने तो बहुत सारे मैसेजेस दे दिए और आपके बुक में बहुत कुछ होंगे जो आज के यूथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फिर भी आपके मुंह से कुछ सुनना चाहेंगे जो यूथ को वो और भी ज्यादा मोटिवेट हो, और जो भी वो करना चाहे. ऐसा नहीं है कि एक इंजीनियर डॉक्टर होना है, जो भी करना चाहे, क्योंकि आज के इतने डिस्ट्रैक्शन हो गए हैं, सोशल मीडिया लीजिए, हर तरह से कंसंट्रेशन लोगों के बहुत कम हो गए, स्पेशली यूथ के. तो उसमें चाहेंगे कि आप कुछ उनको मैसेज दे जिससे वो अपना रास्ता ढूंढ पाए. Ma'am, I get a lot of messages on social media, on my Twitter and Insta account, from the young boys and the girls. Say, how can we serve the nation? I have not been able to make it in the SSB, or I have not been able to make it to the defense forces. So my message is, देश सेवा के लिए फौज ही सिर्फ एक तरीका नहीं है. सिर्फ गन लेकर के बॉर्डर पे खड़े होना, या ऑपरेशन, या अदर थिंग्स व्हिच आर आर्मी डूइंग, वो एक तरीका नहीं है. देश सेवा इज armies don't go to war, nations go to war. Armies only fight on the front. There are other paths, the comprehensive national power, economic might, the military might, the political will, the diplomatic might, and every individual contributes to comprehensive national power. आप जो भी करते हो जिंदगी में, मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप सरसों का तेल भी बनाते हो, you make sure you make good mustard oil, you produce good mustard oil, जिसकी विदेश में भी डिमांड हो. You will get better rates, a better price. You will earn foreign exchange. You will get some dividends from the government also, and you will live a happy life. So, before you choose a profession, keep your options open and don't foreclose any option. I know people who are my colleagues and who left early. They are doing so well for themselves in some other field. So never ever feel this is the only option, and if I have not made it in this option, this is the end of the game. No, Life. It is just the beginning. Life may be very clear. Life gives you chances, grab them. And now this was only about profession. Otherwise, just be a good citizen. Obey traffic rules. Obey your teachers. Obey your parents. Don't muck around the area. Keep your city clean. Keep your village clean. Keep your house clean. So you are contributing to a good nation, a good India. India which we all are proud of. While traveling, carry a trash bag. Keep everything in that, all the wrappers. Come back home, dispose it off in a waste paper basket. So small things, but you can make a difference. You can be a good citizen as a youngster and as a professional in whichever profession you are doing. Wherever you are, whatever you're doing, do it shiddat se, is my one penny's worth advice. Wonderful, sir. Thank you. Yeah, exactly. That would be the tagline, Siddat se. Anything you do, do it Siddat se. And वही सिद्दत एक कैप्टन को आज लेफ्टिनेंट जनरल KGS धिलन बनाया, जिनको पूरे इंडिया, बस इंडिया में रहने वाले इंडियंस ही नहीं, जो पूरे दुनिया में रहने वाले इंडियंस प्यार करते हैं, जिनके बुक रिलीज होने से पहले प्री ऑर्डर में ही बेस्ट सेलिंग बुक बन गया है अमेज़न में. और क्या बताऊं आपके बारे में, जितना बताऊंगी मैं कम होगा, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कश्मीर में, जहाँ पे लोग आपको कितना प्यार करते हैं, हर जगह पे प्यार करते हैं. तो बस वही शिद्दत, ये उनके लिए मैं बोल रही हूँ जो देख रहे हैं, कि वही शिद्दत एक कैप्टन को KGS धिलन, जो लेफ्टिनेंट जनरल KGS धिलन बनाया है. एंड थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी. एंड I know I feel blessed that to be able to take your interview and introduce your book. तो दर्शक के लिए फिर से मैं बोलना चाहूंगी, ये बुक जो पीछे देख रहे हैं आपको, कितने गाजी आए कितने गाजी गए,
इसको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें से आपको आपके जिंदगी का पर्पस भी ढूंढ यू विल फाइंड। मेरी हिंदी हमेशा खराब हो जाता है, मैं हिंदी बोलने की कोशिश करती हूँ वहां पे अटक जाता है, फिर मैं अंग्रेजी में शिफ्ट कर लेती हूँ। So seriously, I'd like to say to everyone, this is do buy this book, because this is not only a book about his life, about the army. This is the book where you will find your purpose of life as well. So, sir, थोड़ा सा लास्ट में और थोड़ा सा बुक के बारे में बोल दीजिए, क्योंकि रिलीज होने वाले हैं बहुत जल्द, और हम चाहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया कनाडा एंड यूएस में जितने सारे भारतीय रहे हैं वो खरीद पाए इसको। Thank you, ma'am. And Kitne Gazi Aye, Kitne Gazi Gaye is a story of a young 3-year-old boy who faced challenges, who failed, he got up, he tried again, he failed again, he got up again, and he succeeded, he failed again, he again succeeded. And till he rose to become Lieutenant General KJS Dhillon, or the Tiny Dhillon, and the Chinar Corps commander during the most challenging times of Pulwama, Balakot, abrogation of Article 370. So there's an opportunity waiting for you. Don't miss that opportunity. Every challenge is an opportunity to prove your worth. Don't shy away from challenges. Take them head on. If you can handle a challenge, you can handle a life. So be a good citizen, be a successful human being. And this book is releasing on 14th of February as a mark of respect for the Pulwama Bravehearts, whom we lost on 14th February 4 years ago. The book in India is available on Amazon as pre-order. After a few days, it will be available on Amazon USA, Amazon UK, and Amazon Australia. We are trying to work out for other overseas destinations. And happy reading. Enjoy the book. I'm sure, as Nupur ma'am said, there'll be a lot of lessons for you. There'll be a lot of takeaways for you. Have a great reading. All the very best to you. Be a good citizen. Thank you, and Jai Hind. थैंक यू सर, थैंक यू, जय हिंद। एंड फॉर दर्शक मैं बोलना चाहूंगी, यस, टाइनी धीलन इज सर 6 फुट 2 इंच 1 इंच 6 feet 3 inches. 6 foot 3 inch Tiny Dhilan. Yes, Lieutenant General Tiny Dhilan. Thank you, sir. Thank you so much for joining me. Thank you, and Jai Hind.